Assalamu alaikum students. So our first topic is raw material and central movement. There are two type of raw material. The one is about origin. The other one is about any point. About any point. So यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं. Like A, B, C, R, P, Q. It's depend upon you. कि आप किस वेरिएबल से इसको शो करते हो. All arbitrary constant. सबसे पहले earth movement about origin mu prime of r इसको डिस्कस करते हैं. So definition of earth movement about origin is if a random variable, this is a short form of random variable x, assume if a random variable x assume values x1, x2, x3 and so on xn with probabilities p1, p2, p3 and up to pn respectively. Respectively means इस x1 के साथ ये p1 होगा, इस x2 के साथ ये p2 होगा, इस x3 के साथ ये p3 होगा और इस xn के साथ pn होगा. Further, then earth raw movement about origin of random variable x is defined as mu prime of r equals to e of x to the power r is equal to summation n I equals to 1 x of x to the power r of I p of I. This is a general formula of earth movement about origin. Mu prime of r equals to e x to the power r equals to sigma की power n upon I is equal to 1 x I की power r p of I. This is a discrete random variable. Now we have a some case about origin. So we write here particular cases. Number one,
If r equals to 0, or you may write when r is equal to 0, we get mu prime of r equals to sigma n I equals to 1 x of I to the power r p of I. Put I equals to 0. So mu of 0, so here I is equal to 1 and x of I to the power 0 p of I. And we know that anything to the power 0 which is equal to 0. It means x of I to the power is equal to 1. So mu 0 prime I equals to 1 and 1 p of I. Now if you know कि प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर हम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मींस हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं, उन प्रोबेबिलिटी का सम करें तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आती है 1 के बराबर और लोवेस्ट 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास होती है वो कहाँ से 0 से 1 के बीच में. तो इट मीन्स दैट यहाँ पे अगर हम आई इज इक्वल टू 1 to n पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 1, तो ये पूरी चीज किसके बराबर आ जाएगी, इट मीन्स म्यू प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू दी 1. अब इससे हमें एक रिजल्ट मालूम हो गया. अब हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि भाई आप अर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन मालूम करके दो, तो वहाँ पे आपने म्यू प्राइम ऑफ 0 भी मालूम करना होगा अपने पास, 1 क्या पता अर्थ मूवमेंट की जगह बोलते थर्ड मूवमेंट मालूम करो 3 यानी कि 3 तक मालूम करना होगा, तो ऑटोमेटिकली आप 0 को 1 लिख सकते हो और रीजन दे दोगे पार्टिकुलर केसेस ऑफ अर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, उसकी वजह से म्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है. आगे करेंगे, देखते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. नाउ condition 2, if I equals to 1, then we put directly mu 1 to the prime equals to sigma n I equals to 1 x of I to the power 1 p of I. So this is equal to e of x, which is mean. This should be नोट लिख देता हूँ, इससे अच्छे से और समझ आ जाएगा. मीन और एवरेज वैल्यू और expected value all are known as mathematical expression expectation. Like e of x equals to summation n I equals to 1 x of I p of I equals to x bar equals to mu 1 bar. All are equal. Expected value till rth term.
e of x to the power 1 equals to sigma x to the power 1 p of x. E of x to the power 2 equals to sigma x power 2 p of x. E of x to the power 3 sigma x to the power 3 p of x, and so on. E of x to the power r equals to sigma n I equals to 1 x to the power of p of x. इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हो सकती है जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे, जब हम इसको अच्छे से करेंगे. नाउ पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट ओरिजिन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम पॉइंट. रॉ मूवमेंट, ब्रैकेट में लिख रहे हैं दिस विल यूज फॉर रैंडम वैल्यू. So point one raw movement about any value a denoted by mu prime of r. If a random variable x assume by assume value x1 x2 x3 and up to xn with the probability p1 p2 and up to pn respectively. Then the earth movement about any any value a of random variable x is defined as mu r prime equals to e r minus a to the power r. Now, by definition of expectation for discrete random variable mu of r to the prime sigma n I equals to 1 x of I minus a to the power r p of I. So इसके भी कुछ केसेस हैं. Case 1, if I equals to 0, we will put directly sigma ni equals to the 1 x of I minus a to the power 0 p of I. As you know, anything to the power 0 is equal to the 1. Is also same as
the case number one of आर्क मूवमेंट अबाउट ओरिजिन. सो ये भी वन के बराबर ही हो जाएगा. एक स्टेप और लिख लो चाहे तो. वन पी ऑफ आई विच इज इक्वल टू दी वन. इट मीन्स mu prime of 0 equals to the 1. Now case 2 if I equals to the 1, mu prime of the 1 sigma and I equals to the 1. Now x of I minus a to the power 1 p of I. Then हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x of I p of I minus a I to 1 and p of I. If you remember, ये हमने पीछे भी किया था. ये किसके बराबर था? अगर हमें याद हो, ये हमने पीछे किया था. ये बराबर था किसके? दिस वन. ये तो बराबर था मीन के ई ऑफ एक्स. सही है. इट मीन्स ये जो ये वाली चीज आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी ई ऑफ एक्स के. एंड ये वाली चीज किसके बराबर आएगी? क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी को जब कम करेंगे किसके? वन के बराबर. याद हो केस नंबर वन में हमने किया था. इट मीन्स ये आ जाएगा ए. सो mu dash of 1 equals to e of x minus a. अच्छा. सो अब हम कर रहे हैं अर्थ मूवमेंट अबाउट मीन और सेंट्रल मूवमेंट. ओके. सेंट्रल मूवमेंट mu of r. Now if a random variable x, if a random variable x, assume value x1, x2, x3 up to xn with probabilities p1, p2, p3 up to pn respectively. Then the arc movement about mean of random variable x is defined as mu of r equals to x e bracket open x minus x bar bracket close to the power r as e of x equals to x bar. ये हम जानते हैं कि e of x को x bar के बराबर भी लिख सकते हैं. Now so mu of r e of x minus e of x to the power r or mu of r sigma
n I equals to the 1 x of I minus e of x of I to the power r p of I। तो इसके भी कुछ केसेस हैं। केस वन, if I equals to 0, then mu of 0 equals to 1। याद है, दिस इज नॉट अ प्राइम, म्यू प्राइम। पीछे हम म्यू प्राइम पढ़ के आए हैं, ये सिंपल म्यू है, इस चीज का ख्याल रखें। केस टू, if I equals to the 1, then mu1 will be n I equals to 1 x of I minus e x of I to the power 1 p of I. Then it will be n I equals to the 1 xi pi minus n I equals to the 1, we can write this x bar p of x pi. Then we know this is e of x, okay? And if we take outside this x bar, then some sigma I is equal to 1 to the power n p of I, and we know this is equal to the 1, so it will be mu of 1 equals to e of x dot x bar. We also know that here x bar equal to the e of x, so ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको ओपन कर लो या इसको ओपन कर लो। मैं इसको बना लेता हूँ। इट मीन्स e of x will be x bar, so x bar minus x bar, this will be 0. It means mu of 1 will be 0. Now case 3, if I equals to the 2, so mu of 2 equals to sigma n I equals to the 1 x of I minus x bar to the power 2 p of I. As you see, this is xi minus x bar to the power 2. This is similar to the a minus b to the power 2. So first we solve this. So what is a minus b to the power 2? A minus b to the power 2 equals to a square minus 2ab plus b square. Okay, so this will be x of I square minus 2x of I x bar and plus x bar to the power 2 p of I. Now अब इसको अलग अलग कर देते हैं। x of I equals to 1 x of I square p of I, okay? Then minus 2 and x bar, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और sigma n I to the power is equal to 1 xi and pi। तो हमारा जो ये सिग्मा लगना है वो सिर्फ आई के ऊपर लगना है, तो आई यहाँ पे सिर्फ वो रखना है, उसके बाद बाकी सब चीजें साइड में निकालिए। ये प्लस एक्स इसके ऊपर भी नहीं लगना, तो इसको भी बाहर निकाल लो, ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। देन सिग्मा एन आई इक्वल टू दी 1 पी ऑफ आई। नाउ जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे सिंपल अगर एक्स हो तो क्या बनता था, ई ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 2 एक्स बार
this will be e of x plus x bar square, and we know that this will be 1. Okay, so me too, e of x square, this will be same, then minus 2. This is x bar, and this is also x bar. That means if we add both, like if we have a same denominator, so power will be added. It means a to the power 2. So here x to the power x bar to the power 1, x bar to the power 1. This means e of x bracket open close to the power 2 plus, and also we write it as e of x to the power 2. Okay, this is 2 and this is 1. 2 minus 1, 1. Now 2 equals to e of x square minus e of x, and this is called variance. Okay, it's called variance. So here it is the first example. If x is a random variable with following probabilities, then find first raw moment about origin. X is equal to a. Here are some values of 0, 1, 2, 3, and there is a probability when we put x is equal to 0, which is 1 upon 3. When we put 1, which is the probability of 1 is 1 by 2. The probability of 2 is 1 by 24. The probability of 3 is 1 by 8. Now solve this problem. Solve. इधर थोड़ा सा सही कर लेगा. Find first 4 fourth row. So fourth, or it will be like fourth row moment. Okay, it means we have to find mu prime of 4. So first we find, put r equals to 1. जनरल फार्मूला, इससे पहले जनरल फार्मूला लिख देगा, फिर ये लिखिएगा. सही है. अब मैंने यहाँ पे लिख दिया पुट आर इक्वल टू 1. जनरल फार्मूला क्या था? म्यू, सबसे पहले जनरल फार्मूला, म्यू prime of r equals to summation n I equals to the 1, x of I to the power r p of I. So put I is equal to 1, mu prime of 1 I equals to the 1 to 3, because we have the highest power is 3, so we have to go for 3. Okay, I r to the power 1 p of I. Okay, if you remember, we did it before. हम इनको केसेस के अंदर कर चुके हैं. So let me show you. Earth movement. Oh, I'm sorry. Put r is equal to 0. First we 0. Start from 0. हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्ट आपने 0 से ही करना है, 1 से नहीं करना. 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, हमेशा ऐसे. It means here 0 and here 0. This will be 1. Mu of 0 prime I equals to the 1 3 x, this will be 1 p of I, and we discussed it before. Here when we put I is equal to 0, the answer will be 1 about origin. Okay, so we will put here 1. इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास 1 निकल आएगा. हमें कुछ सॉल्व किया वो करने की.
आपकी मर्जी, आप सॉल्व भी करके देख सकते हो। सॉल्व कैसे होगा वो अभी जब मैं अगली वैल्यू निकालता हूँ तो उससे पता चल जाएगा सॉल्व कैसे होना है। सही है। नाउ नाउ फॉर I is equal to 1, so put I is equal to 1. You may write here, take I is equal to 1, or also you may write here where I is equal to 1. Okay, so mu of 1 prime equals to sigma I equals to 0 to the n x of I to the power 1 p of I. So अब आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, देखो 0 1 by 3 plus 1 1 by 2 plus 2 1 by 24 प्लस 3 1 by 8। अब आप अपने क्वेश्चन को जाके देखो, क्वेश्चन में क्या दिया था। देखो, जीरो पे क्या प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, 1/3। 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी दी थी, 1/2। 2 पे क्या प्रोबेबिलिटी दी थी, 1/24। 3 पे क्या प्रोबेबिलिटी थी, 1/8। अब एक चीज और समझना, ये जो नीचे प्रोबेबिलिटी लिखी ना, 1/3, 1/2, 1/24, 1/8, 1/8, सही है। इनको जब आप ऐड करोगे ना, ये किसके बराबर निकलेगा, करके चेक कर लेना, आपको फिर जवाब मिल जाएगा जो मैं पीछे डेरिवेशन का यूज से, सही है। वैसे बताया तो 1 के बराबर निकलेगा, तो इस वजह से जब यहाँ x नहीं होता था, x को अगर हटा दो, जीरो कर दो, नहीं बल्कि x को, हाँ x को जीरो कर दो आप, सही है। x को जीरो कर दो, x खत्म हो गया। अब प्रोबेबिलिटी, अब जब प्रोबेबिलिटी आएगी तो ये वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, जो x लिखा है ना साथ में, ये वाली वैल्यूज नहीं आएंगी। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फिर, ये वाली आ जाएंगी खाली। इन वैल्यूज को हटा दो, जैसे जीरो को हटा दो, 1 को हटा दो, 2 को, 3 को, तो ये वैल्यू होंगे, इन वैल्यू को जब प्लस होगा तो ये 1 के बराबर। इस वजह से जो पिछली वाली वैल्यू थी ना आर इक्वल टू, उसमें डायरेक्ट 1 हम लोग इस वजह से लिखेंगे, सही है। नाउ अब ऐसा कैसे, तो इसलिए हमने जीरो, ये देखो एक्स हमारे पास क्या था, जो गिवन था एक्स 1 2 3, जो गिवन होगा उस हिसाब से लेके चलना है। और साथ में प्रोबेबिलिटी देखो मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर निकल आएगा। तो मैं कैलकुलेटर से निकालता हूँ क्या निकलेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जीरो से मल्टा जीरो, 1 से मल्टा 1/2, 2 से कटा 1/12, then 3/8। now add all of these, so this will be 23, 23/24। Okay, now when I equals to the 2, so mu of 2 prime equals to summation I equals to 0 to 3 3 x of I to the power 2 p of I. So this will be 0 power 2 1/3, 1 power 2 1/2, 2 power 2 1/24, 3 power 2 1/8। So ये तो जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, कोई पावर होगा, जीरो आएगा, जीरो। 1 to the power 1 ही आएगी, तो इट मीन्स दिस विल बी 1/2 and to the power 4, and 4 will be reduced to 24, which is equal to 4 on the 4, 4 4 the 4 6 the 24, it will be 1/6। then 3 to the power 2 is 3 3 the 9, so 9/8। now add all of these, uh, after adding all of these, this will be 43/24। then when r equals to the 3, mu 3 prime summation I equal to 0 to the 3 x of I to the power 3 p of I, then same, just power 3 will be replaced, 1/3 plus 1 to the power 1 3 1/2 plus 2 to the power 3 1/24
plus 3 to the power 3 1 by 8. So ये हमेशा 0 रहेगा, ये 1/2 and this will be to the power 3 will be 8, then 8 4 the 24. This is 1 by 4 and 3 to the power 3 which is 27. So 27 upon 28. So 0 plus 1 upon 2 plus 1 upon 8 4 8 3 the 24. So this is 1 upon 3 3 to the power 3 which is 27 upon 8. So uh, 3 mu prime 3 equals to 101 upon 24. Last one, when I equals to the 4. So we will write as mu 4 to the prime sigma I equals to 0 to 3 xi to the power 4 p of I. So 0 to the power 4 1 upon 3 plus 1 to the power 4 1 upon 2 plus 2 to the power 4 1 upon 24 plus 3 to the power 4 1 upon 8. Okay, so this will be 0, this will be 1 upon 2 and to the power 4 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, and if here it is 16, then 16 upon 24, 8 to the 16, 8 to the 24. It means 2 upon 3. This is 3 to the power 4 which is equal to the 81. 81 upon 8. So after adding all of these, 271 by 24. So here it is another example which is your homework. Okay, so मैं इसकी हिंट देता हूँ छोटी सी कि कैसे स्टार्ट करना होगा इसको। कि जब इसका फार्मूला लिखोगे ऐसे लिखोगे, म्यू ऑफ 1 प्राइम I equals to -2 to सॉरी ये ओरिजिन के लिए नहीं है, ये बात याद रखना। सही है, ये जो है ये तीसरे केस वाला काम है। मैं show करता हूँ। इसके अंदर हमने ये वाले जो किया था, आर्क मूवमेंट अबाउट मीन एंड सेंट्रल मूवमेंट, या तो मीन बोला जाएगा या सेंट्रल मूवमेंट बोला जाएगा। इससे याद रखना है। ये जो पिछला वाला रॉ मूवमेंट का था हमारे पास, वो क्या था कि ये हमारे पास कोई ना कोई रैंडम वेरिएबल यानी कि ए की कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी। इससे पिछला वाला हमारे पास क्या था, ओरिजिन का, अबाउट ओरिजिन यानी कि 0 पे, .0 पे। सेकंड केस हमारे पास क्या था, कोई ना कोई ए की वैल्यू दी हुई होगी। और थर्ड हमारे पास क्या है, या तो मीन है या सेंट्रल मूवमेंट है, दोनों में कोई एक चीज है। तो इसका मतलब कि हम इस वाले से सॉल्व करेंगे। यही वाला आपको दिया फॉर्मूला, इसको तो ट्राई करना। नहीं हो तो फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। सही है। सो दिस आवर फर्स्ट टॉपिक एंड मैं इसकी पीडीएफ भी बना देता हूँ। अभी मैं जिस प्लेटफॉर्म को पुट कर रहा हूँ वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी।